honoring me, worshipping me. So I think I am also God. यदि यही प्रकार दयान्विता भाव आम मन में उद्वेग नहला जीवित नहला ताले आम सब समय गर्व में उन्मत्त होगा और आम भाविबा जे हाँ ये सब सम्मान व लाभ पूरा पूजा प्रतिष्ठार मुझे हूँ एकमात्र प्राप्य व्यक्ति आम भगवान. So our philosophy is aham brahmasmi, not aham ishvara. आमर दर्शन हूँ जे आम हूँ ब्रह्मास्मि अर्थात जीव ब्रह्म आम ईश्वर नुह. So it is very important we understand this concept because Srila Prabhupada went to great length to explain to us that we are actually servant of the Supreme Lord. Srila Prabhupada सब समय एक था हमको शिक्षा देशंदी जे आमें समस्त हो जे भगवान श्री कृष्ण कर सेवा कर. So our position is that when we accept the spiritual master for shelter and he gives us a name, after the name he puts a title which is called either Das for men and Dasi for women. जेवले हमारे परंपरा है जी अच्छी जेतेबेले जन आध्यात्मिक गुरु कोनसी शिष्य को दीक्षा प्रदान करती तेणु तांकर नाम पछरे प्रभु मानक पई दास लगाती एवं माता मानक पई दासी कहती ता से जणा पड़छ आमे होसे भगवान के दास एवं दासी. So we should never forget that is our actual position. We are servant. As Prabhupada many times says that when we are spiritually awakened, Jivare Sarupa hoy Nitya Krishna Das, that we are eternally servants of Krishna. That is the most important aspect of on our journey to back to Godhead. तेणु कौन से समय रे आमे यह भूलिबा उचित नुहे जेबडी श्रील प्रभुपाद कहती जे आमे माने नित्य कृष्ण दास जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य कृष्ण सब समय रे आमे कृष्ण के दास एबडी कौन समय आसे ने हम भगवान ही जेबो नहीं तेणु सेति में यह बहुत महत्वपूर्ण समझते जे यह सब समय मन रखिया उचित. So sometimes in our intellectual understanding we accept, yes, I am a servant. तेणु बेले बेले यह देखा जाए जे हमर निजर बुद्धिमत्ता बल रे आमे यह बुझु जे हां आमे हो जे भगवान कृष्ण के दास. But our reality and our practical practice is that we think we are controllers, we are masters. इन जेत वास्तव क्षेत्र को आसु सेतबेला आमे निज भाबो जे आमे हो जे किछि अधिकारी वा मालिक कोन जे बड़ी प्रकार जे बा कोन से जिनसर कंट्रोलर एबडी प्रकार मनोभाव आसे. So it is very important that we meditate on this aspect, that we have to develop absolute humility in order to nurture spiritual practice. तेणु सेति हम समस्त को यह मन रखिया होते सब समय रे एवं यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिनिस जे एबडी प्रकार रे भावधारा चिंताधारा यदि हम सब समय रे उन्नत करिया जे हम भगवान कृष्ण के दास तो वास्तविक हमर जीवन रे ये जो दयामय भाव उद्वेग हो एवं हम भगवान के कृष्ण सेवा करे पे उपयोगी होगा. Hari Bol, Monkey Vihari ki jai. So we have to understand this concept that when we come to Krishna consciousness, we all willingly come and accept to take shelter of Krishna, specifically in this age, through the holy name. तेरा हमें समझते हैं हम रखा पड़ियो जे आम माने स्वतः प्रवृत्त ए कृष्ण चेतना को आसीचे बा यहाँ को आम सर्वदा ग्रहण करचे विशेष कर यही कली युग रे आम जो विराजमान करचे ए युग रे भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन आश्रय करी आम कृष्ण चेतना ग्रहण करचे. So we all know that either we have read or we have heard many times that this yuga dharma of this age is Harinam Sankirtan. तेना हम समस्त जानिचे हुए तो हमें गणेश पुस्तक माध्यम रे पढ़ी के हो बा हमें श्रवण करी के हो जानिचे जे ए युग रे भगवान प्राप्त होआ पई युग धर्म होची हरि नाम संकीर्तन. And also many times we recite the verse Hare Nam eva kevalam kalo nasteva gatiranyatha, and we preach to everyone that there is no other way except the holy name of the Lord. तेणु हम अनेक समय श्लोक सुनो जे हरे नाम केवल एवं व्हाट यू सेड द लास्ट लाइन that we understand. हमें यह बुझु एवं बेले बेले यह को अन्य मान को शिक्षा देवा पई मध्य हमें इच्छा करू that holy name is the only way, no other way. हां भगवान के कृष्ण का दिव्य नाम हो जे एकमात्र पंथा या व्यतीत अन्य पंथा नहीं.
Unfortunately, this understanding is only on intellectual level. किंतु दुर्भाग्यवशतः ये जो बुझामणा हम रही थी या केवल हमारा मानसिक स्तर रह जाए. But we haven't embraced this understanding to the level of the heart. किंतु यहाँ को हमें हृदय से ग्रहण कर करना. Because if you really understand this and accept this from the heart, that this is the transcendental Yuga Dharma of Harinam, then you would be only interested in Harinam and nothing else. यदि हम लोग वास्तव में हमें हृदय रे ग्रहण करूँ, ताकि केवल हमें ये हरिनाम की आश्रय करिए. सब समय रे हमारे जीवन रे एकमात्र नाम को ही आश्रय करिए. So that prayer of Narottam Das Thakur is saying, Goloka Prema Dhana Harinam Sankirtan. That this Harinam has specifically come to deliver the people of Kali Yuga and in the form of the wealth of the holy name. नरोत्तम दास ठाकुर कहते गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन. ये हरिनाम होची केवल एक मात्र वस्तु जे कि हमके भौतिक जगत रो हमको उद्धार करिवो एवं भगवत धाम को नहीं जीवो. So we have so much understanding, so much knowledge given to us by the acharyas, the conclusions in Srila Prabhupada's books. Even after all this, still we remain on intellectual level. तेणु ये सब सत्य मध्य हमें विभिन्न शास्त्र ग्रहण करते विभिन्न भक्त मान श्रवण करते विशेषकर प्रभुपाद ग्रंथ माध्यम पढ़ुचे. किंतु दुर्भाग्यवशतः देखा जाउछि जे या केवल हमर मानसिक स्तर रह जाय हमर बुद्धिमत्ता स्तर रह जाय. So Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshastakam prayers, one of the prayers is Trinadapi Sunishena Taropi Sunishena Amanina Amanidena Kirtana Sadahari. That one should chant the holy name of the Lord in the humble state of mind, one should be watered in the tree, free from false ego, one is ready to offer all respect unto others. In such a state of mind, one can chant the holy name very pleasantly. जेवढी श्रीमंत चैतन्य महाप्रभुंकर शिक्षाष्टक ब्राह्मण कहते तृणादपि सुनिचन तरल सहिष्णुना अमान्यन मानदेन कीर्तन्या सदा हरि. जे बुर्खेठर हमें सहिष्णु हवा दरकार तृणठर आवरी निम्न ये प्रकार दरकार अन्यମାନଙ୍କୁ सब समय सम्मान प्रदान करे दरकार केवल सम्मान आशा एवढी प्रकार यदि मनस्थ बा चिंताधारा में रहियो ताहाल जे कि हम भगवानकर नाम जप करि परबा नाम कीर्तन करि परियो. So very, very intimate disciple and follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Haridas Thakur, Namacharya, he says that one must embed this verse in their heart so that every time when they are chanting, they understand that this is the principle through which I have to chant the holy name. जेवढी प्रकार हमें देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग पार्षद जी हरिदास ठाकुर से उपदेश प्रदान कर कहते जे जनकु ये जो तृणादपि सुनिचन जो मंत्र भाष रही थी महाप्रभु शिक्षाष्टक रे या को जने हृदय सहित ग्रहण करिया दरकार है. जा फल कि या यदि हम चिंत या एई प्रकार मनस्थ हम यदि मन रे रही जागृत हो ताहल जे कि हम शुद्ध नाम भगवान को कर करिया. So as I said that some in this material world it is natural in our culture, especially in India, that when you are putting a tilak on the forehead and chanting Hare Krishna and Japa, people will respect you as saintly person. जेवढी प्रकार भारत रही संस्कृत रही थी जे कोनसी व्यक्ति तिलक धारण करू कंठी माला धारण कला पर हम कले हम देखु जानू जे जने वैष्णव अटंती ताको हम सम्मान प्रदर्शन करू. So when you start to get this respect from everyone due to your chanting of the holy name, you begin to think, yes, I am someone very special. तेणु जेतेबेले एई प्रकार आमे सम्मान प्राप्त हो अन्यमान ठारू वैष्णव हिसाब रे तेना मन रे संगे भाबु जे हम वास्तविक जन वैष्णव हेबली. So when you begin to cultivate this kind of culture that you are someone very special, you are very powerful person, then false ego begins to sprout and grow stronger and stronger. यदि एई प्रकार मन रे आसे जे वास्तविक हम सम्मान अधिकारी बा मन वैष्णव हेबली धीरे धीरे हमारे मन रे गर्व अहंकार भाव धीरे धीरे जागृत हो. But the very important aspect of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teaching is saying amanina manidena. One must not expect any respect at all, but one must be ready to offer respect unto all others. So therefore Mahaprabhu is very clearly saying, even if you get respect, you should give 10 times more respect to the other person who is respecting you. जेवढी चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक कहते अमानिना मानदेन अर्थात
आमे कौनसी समय रे ए मन करिया उचित न जे आमे से सम्मान पाऊ किंतु ता प्रतिबदले सब समय में प्रस्तुत होबा दरकार जे अन्य केवल प्रकार सम्मान प्रदर्शन करिया किंतु एवढी प्रकार मनोभाव यदि हम रखिबा यदि हम के सम्मान प्रदर्शन करिया आवश्यक सम्मान दनोची आमे तार 10 गुण ताको सम्मान प्रदर्शन करिया दरकार है जाफर कि हमारा मानसिक स्थिति ठीक रहे भगवान नाम जप करिए. So if you want to be successful in our practice of bhakti yoga, then this is the minimum requirement to take to the shelter of the holy name and chant with humility. यदि वास्तविक कि भगवान का नाम जप करे भक्ति मार्ग रे हम सफलता लाभ करिया पे इच्छा करू ताले जन को निश्चित भाव रे ए जो सुनाद विष्णुचरण भाव यह समस्त निम्न मानर ये हवा दरकार योग्यता हवा दरकार सब कम से कम ये योग्यता समस्त अगर हवा थी दरकार. So some of you may have heard the story of the Brahmana and the cobbler. अब माने समस्त एक अपसन से प्रभाव कहती जने ब्राह्मण एवं जने मोची एक अपसन सुनित कहानी सुनते समस्त. So it is no harm in hearing again, because every time you hear more and more, it will bring the message to the heart, and you'll understand the importance of this aspect of humility. यदि